कर सकते हैं। ठीक है करेक्ट सुंदर। Yes, sir. You can go, sir. It's live. Okay, I told thank you, you. ठाकुर साहब ने बोल दिया, you can start. जी जी ठाकुर साहब ने बोल दिया, थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है इस मंच पर, जिसका ये जैसा मैंने कहा ये हमारा घर का प्रोग्राम है। रिलैक्स एटमॉस्फेयर विथ अ वेरी डेफिनेटिव पर्पस, एंड वी वेलकम एवरीबॉडी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, जिसका शीर्षक जो हमारा शीर्षक जो है आज के टॉपिक का, नौकरी ऑन कॉम्पिटेंसी फॉर फ्री और एजेंटगिरी, the choice is yours. नौकरी एंड कॉम्पिटेंसी फॉर फ्री और एजेंटगिरी, the choice is yours. मैं सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा हमारे कैप्टन जय कुमार साहब का। ही इज अ नॉटिकल एडवाइजर। जो हमारे पैनलिस्ट है उनका मैं स्वागत करता हूँ। कैप्टन जय कुमार साहब, आपका स्वागत है इस मंच पे। कैप्टन जय कुमार साहब, एज आई सेड, नॉटिकल एडवाइजर, डायरेक्टर जनरल शिपिंग। ये इनका थॉट था कि जो आज के जो टॉपिक है, नौकरी ऑन कॉम्पिटेंसी फॉर फ्री और एजेंटगिरी, द चॉइस इज योर्स। कई सीफेरर्स, गुड आफ्टरनून बरवे साहब, Good afternoon. Very good initiative. Most appreciated. Thank you. I will request all the participants and those on the panel to keep their on mute, so we'll have a better bandwidth. Thank you. तो ये जो thought है, नौकरी किसको नहीं मांगती, सभी को नौकरी मांगती है। Everybody wants to be gainfully employed. मगर जो पिछले कई सालों से जो चल रहा है, पहला भी होता था, means unhealthy practices for getting jobs, illegal practices for getting job, पहला भी होता था। ऐसा नहीं कि पहला 20 साल पहला 30 साल ऐसा नहीं होता, मगर आजकल बहुत ज्यादा ये हो रहा है about the frustration। क्वालिफाइड सीफेरर्स को नौकरी नहीं मिलती है, जिनको बराबर नौकरी होना चाहिए। they have to go by undue measures, एजेंट के थ्रू या किसी थ्रू, उनको ऐसा लगता है कि ये होना, इसी तरीके से नौकरी होती है। सो कैप्टन जय कुमार साहब ने एक थॉट दिया था, हम थोड़े दिन पहले, मैं और हमारे साथी मिलिंद कांदलगांवकर और हमारे साथी मिलिंद कांदलगांवकर, वाइस प्रेसिडेंट मोसी, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी सुनील नायर, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हमारे सुरेश सोलंकी, जब हम जय कुमार साहब से मिलने गए थे तो उन्होंने तुरंत कहा था हमारे डिस्कशन में, एटलीस्ट वी शुड टॉक अबाउट। हम मार्गदर्शन करते हैं, मगर एक वन मोर लेवल ऑफ मार्गदर्शन, अवेयरनेस क्रिएट, एंड एटलीस्ट वी शुड टॉक अबाउट इट। तो कुछ बात करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ हल निकलेगा, कुछ लोगों को दे विल बी मोर एनलाइटेड। दैट इज अ पर्पस ऑन द ओकेजन ऑफ द आजादी का अमृत महोत्सव के प्लेटफॉर्म से हमने ये वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया है। द पर्पस इज, सोल पर्पस इज टू क्रिएट अवेयरनेस एंड व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिस। साथ में हमारे इंडियन फ्लैग के को रिप्रेजेंट करने के लिए कैप्टन सुजीत छुरी इज आल्सो हियर, हेड ऑफ द फ्लीट पर्सनल ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग। फॉरेन फ्लैग को रिप्रेजेंट करने के लिए कैप्टन संकल्प शुक्ला, मैनेजिंग डायरेक्टर बर्नआउट शुल्टे, आपका भी स्वागत है। और हमारे प्रसाद हरिहरन, ही इज फ्रॉम कार्निवल सपोर्ट सर्विसेज। हम बात तो करेंगे, साथ साथ हमें अपॉर्चुनिटीज क्या है अदर सेक्टर्स में, क्योंकि एक फोकस रहता है, मैं जाऊंगा तो सिर्फ फॉरेन फ्लैग में जाऊंगा, और मैं जाऊंगा तो सिर्फ फॉरेन शिप में जाऊंगा और किधर नहीं जाऊं। तो इसके बारे में भी कुछ चर्चा हम करेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द क्रूज, कोस्टल, ऑफशोर एंड टग्स एंड क्राफ्ट, इसके बारे में कुछ मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ है श्री प्रसाद हरिहरन, मैनेजिंग डायरेक्टर कार्निवल सपोर्ट सर्विसेज। कैप्टन राकेश सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर ए श्री शिपिंग, वो अभी तक आए नहीं है, शायद ट्रैफिक में फंस गएंगे, उनकी कार लेट है ट्रैफिक के अंदर, तो आएंगे, जब ये आ जाएंगे आई एम वेरी श्योर। एंड वी हैव कैप्टन नीलेश कल्याणपुर, हेड ऑफ ऑपरेशंस ऑफ ओशन स्पार्क। तो साथियों, प्रेजेंट डिग्निटरीज, we will go ahead with our function, and we also have our MUSI president Captain Hiranandani with us. Thank you for gracing the occasion, sir. And the one and only Varuna awardee we have amongst us as of now is Captain Rajesh Tandon,
वरुण अवार्डी की एक बात लेवल अलग ही रहता, तो वी आर वेरी हैप्पी दैट ही इज आल्सो हियर. और मिस्टर अमर सिंह ठाकुर, MUI जनरल सेक्रेटरी. So साथियों, we will, and as and when the colleagues will join in, those who have been given Zoom. So I would like to first request Captain Jai Kumar Saab to give his opening remarks. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, Gani Saab, for first and foremost bringing in this topic for discussion. And I would like to thank my fellow panelists also for being here today. This issue that we are discussing has been, it's known to all of us. It's the elephant in the room. And unfortunately, we don't discuss. Since we have not been discussing this issue, what has happened is that the very top names also get dragged into this aspect. If a seafarer has to pay money to get a job, the agent in between says, "Upar tak jata hai." Whereas many a times it is not there right up to the top. The maligning of the name is therefore very much there. In the government sector, what we have is, if there is any such thing, there is a defined mechanism which deals with these sort of issues. And any government official indulging in unscrupulous practices, there is a mechanism to address it. In the private sector, unfortunately, even though the very top names sometimes are being used in the private sector, tarnishing the image of the individual and their organization, we have not yet come up with a industry-led mechanism that will put a stop to such unscrupulous practices. I will just like to enlighten everyone that there is a specific provision in the Merchant Shipping Act, I think section 97, which says that you cannot take money for giving employment to a seafarer. It is categoric. It is prohibited as per what it says. So today I am hopeful at the end of the deliberation, if we can come up with a mechanism, an industry-led mechanism, that the middlemen who are exploiting our seafarers, they are not able to do it. And unless we start discussing and acknowledging there is a problem, we will not find a solution. So I would definitely feel that Nusi and Mr. Abdul Ghani Sarang, for really thank him for bringing out this topic for discussion, so that hopefully awareness will be created and some solutions will be there. Thank you, Mr. Ghani. These are my opening words. Thank you, sir. Thank you so much, and very relevant. आपने जिस तरीके से इसको पेश किया about this menace which is there in our, particularly in our fraternity. अब मैं चाहूँगा हमारे बीच we have a seafarer, two seafarers. One is a seafarer, Syed Amik Ashab. I would want him to relate his experiences briefly, Syed Amik Ashab, because what he is going to say is Hasbe Hal is the feeling of hundreds and hundreds of seafarers who have gone through this. He is a victim of this particular AGENTGIRI. And more than 1,500 seafarers had registered for this webinar. They are watching it live on Facebook and YouTube. So what he is going to say? Yes, Syed Amik Ashab, please go ahead. Sir, good afternoon, everyone. Myself, Syed Amik Ashab, rank chief cook. सर मेरी करियर की शुरुआत 2015 से किया था हमने. 2015 में ट्रेनिंग किया है मुंबई मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से. उसके बाद हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई सर. हम घर चले गए. घर से जब भी हमारा सीवी वगैरह हमारे पास आ गया तो मैं बॉम्बे आया. बॉम्बे आने के बाद जो है सर, जैसे एज अ फ्रेशर सब जॉब ढूंढते हैं तो हमको कुछ नॉलेज एक्सपीरियंस था नहीं, कैसे जॉब मिलती क्या है. तो मैं बॉम्बे आया, काफ़ी दिन इधर उधर ऑफिस में गया. फिर बाद में कुछ फ्रेंड मिले, उन्होंने बताया कि जैसे एजेंट को जो है पैसे दे के ज्वाइनिंग किया जाता है. तो बोला ठीक है.
तो फिर वो फ्रेंड्स के साथ मैं ऑफिस गया, एक बेलापुर में पुरंदर मैरी टाइम प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी का नाम था। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे अपना रिज्यूम दिया हमने, उनसे बोला सर हमको ज्वाइनिंग चाहिए, रैंक हमारा जो है जीएस है। उन्होंने बोला ठीक है हो जाएगा आपका काम। तो मैं, ठीक है सर। तो उन्होंने, मैं बोला सर कितना पैसा कितना लगेगा, तो उन्होंने बोला 3.5 लाख रुपए लगेंगे। तो उसके बाद हमने बोला ठीक है सर। तो हमने अब हमारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके सबमिट कर लिया उन्होंने। फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद उन्होंने फ़ोन किया, बोला आपको पैसा जमा करना पड़ेगा 2 लाख रुपए अभी पहले। तो हम कहे, सर ज्वाइनिंग के टाइम पे हम दे देंगे, जैसे हो जाएगा ज्वाइनिंग के टाइम पे दे देंगे। लेकिन सर उन्होंने बोला नहीं अभी जमा करना पड़ेगा, हमको बाहर से पैसा भेजना रहता है। हम कहा ठीक है सर। उस टाइम पे हमको इतना नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने बोला था कुक के लिए हमको भेजने के लिए, कि कुक में हम आपको भेजेंगे और $500 सैलरी रहेगी आपकी। तो उस टाइम पे हमको इतना भी नहीं मालूम था सर कि सीओसी के बिना कोई कुक में सेल नहीं करता। और हमने जो है फिर उसके बाद 2 लाख रुपए उनको हमने कैश दिया बाई हैंड। फिर उसके बाद 5-6 दिन बाद जो है फिर उनका फोन आया, बोले 1 लाख रुपए चाहिए। और तो 1 लाख रुपए हमने और दिया। फिर जब फ्लाइट होने लगी फिर 50,000 हमने दिया था। टोटल ऐसा कर करके हमने टोटल 3.5 लाख रुपए एजेंट को दिया। देने के बाद सर जो है फिर फ्लाइट हुई। फिर जो हमारा जो पुरंदर माई टाइम प्राइवेट लिमिटेड का जो प्रीविंग मैनेजर है विवेकानंद तिवारी करके, तो वो भी था साथ में, और 4 से 5 लड़के और भी थे। तो हम लोग को साथ में लेके वो खुद अपने साथ जो है ईरान गए। ईरान में हम लोग को लेके गए। फिर वहाँ पे एक होटल में रखा गया हम लोगों को। 1 हफ्ते तक हम लोग होटल में थे। और होटल में जो है रहने के बाद फिर वहाँ का जो लोकल एजेंट है उसके पास हम लोग को लेके गया। तो वहाँ पे जो है एग्रीमेंट पेपर रेडी करवाया, हमारा इंडिया वाला एजेंट जो भी विवेकानंद तिवारी। तो उस पे एग्रीमेंट पे $300 सैलरी लिखा हुआ था। तो हमने उनको बोला कि सर आपने तो $500 सैलरी हमको बोला था, तो अभी ये $300 कैसे सर? तो कहे, नहीं अभी यहाँ का लोकल एजेंट बोल रहा है नहीं मिल पाएगा ऐसा वैसा। तो काफी हमने फोर्स किया, हमने बोला कि नहीं सर नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने माना नहीं, बोला आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप इंडिया वापस जाओ। तो सर हमने पैसा दिया हुआ था 3.5 लाख, तो हम इंडिया कैसे वापस आ सकते थे सर? मजबूरी थी। तो फिर हमको एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ा। फिर उसके बाद साइन करके ज्वाइनिंग किया। तो ज्वाइनिंग करने के बाद सर 1 महीने हो गया। तो हमने बोला जो है, फोन किया एजेंट के पास, सर अभी तक सैलरी नहीं आई हम लोगों की। तो उन्होंने बोला कि सैलरी आपको अभी नहीं मिलेगी। तो क्या सर ऐसा क्यों? तो बोलते हैं जो है सैलरी आपका जब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है 1 साल का वो जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब ईरान से जब आप साइन ऑफ करने लगोगे तो आपको फ्लाइट टिकट वगैरह सब कुछ आपके हाथ मिलेगा और सैलरी भी साथ में मिलेगी जाने के टाइम। हम कहा सर आपने ये सब तो बताया भी नहीं था, एग्रीमेंट में भी आपने मेंशन नहीं किया था कुछ। कहे तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी तुम्हारे ऊपर है। अभी बिना सैलरी के जाना हो तुम साइन ऑफ करा सकते हैं, नहीं तो फिर रुकना पड़ेगा 1 साल तुमको। तो सर हमने कहा ठीक है 1 साल तक रुक जाते हैं। फिर मैं 1 साल तक रुक गया सर। जब 1 साल पूरा हो गया हमारा, तो उसके बाद फिर जो है सैलरी के लिए बोला। और सर हाँ एक चीज सॉरी भूल गया मैं बताने को। सर इधर से जो है जनरल कार्गो वेसल हमको बोल के लेके गया था एजेंट यहाँ से, कि मैं जनरल कार्गो वेसल $500 सैलरी आपको दिलवाऊँ। वहाँ $300 सैलरी, और हमको जो है फिशिंग बोट पे उसने डाला। उधर हम लोग जो है पैकिंग वैकिंग का जो भी है सब फिशिंग बोट पे हम लोग काम करते थे। तो उसके बाद जो है 12 महीने हो गया। फिर हमने फोन किया कि सर हमको साइन ऑफ चाहिए, क्योंकि हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है, 1 साल हो गया है सर, हमको घर जाना, हमारा सैलरी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 2-4 बार हमने फ़ोन किया। फिर इंडिया के लोकल एजेंट को हमने फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, वहाँ ईरान के लोकल एजेंट से आप बात करो। तो फिर मैं सर उनके पास लगाया। तो उन्होंने जो है बोला कि अभी कंपनी को कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से जो है मैं अभी साइन अप नहीं कर सकता आपका, तो थोड़ा आप वेट करो। तो हमने बोला सर ठीक है। फिर 10-15 दिन वेट किया, फिर फोन किया, फिर 1 महीना बोला, 1 महीना रुको, 1.5 महीना रुको, करते 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 सर 2 साल हो गए, 23 महीने। तो उसके बाद जो है सैलरी फिर भी नहीं मिला। तो फिर हमारी सर यूनियन की टीम जो है नूसी की टीम इलाहाबाद गई थी। तो हमारे फादर ने से मुलाकात हुई उनकी। हमारे फादर ने जो है बोला कि हमारा लड़का ऐसे ऐसे ईरान में फंस गया है, उसको सैलरी नहीं मिल रही, साइन ऑफ नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद जो है सर इधर से यूनियन का फोन आया हमारे पास, ऐसा ऐसा करो। यूनियन का हमारे काफ़ी सपोर्ट मिला हमको। फिर उसके बाद मैं वहाँ से साइन अप करके फिर इंडिया वापस आया था। यूनियन का काफ़ी सपोर्ट रहा हमारा, नहीं तो आज भी मैं सैलरी का इशू था, हर चीज़ प्रॉब्लम थी, आज भी मैं वहीं ईरान पे ही था। इसलिए हमारे यूनियन का काफ़ी सपोर्ट है।
Thank you very much. सर आप ज्वाइनिंग नहीं हुए? Yes, sir. I was just क्योंकि मैं thank you brother Syed. I was just touching base with Captain Rakesh Singh. उनकी ट्रैफिक अटक गई है तो इज ऑन द वे सर. वो भिंडी बिहार पे उनकी ट्रक ने उनकी गाड़ी रुकी हुई भिंडी बिहार पे, तो विल बी ऑन द वे. सो दिस वाज सैयद आमिर अशरफ. थैंक यू ब्रदर. मुझे खाली ये पूछना था आपको बिफोर वी गो टू संदेश कि आपने जब पैसा दिया 3.5 लाख रुपए, तो आप जब इतना टाइम जहाज पे 11 महीने से फिर 23 महीना हुआ, तो आप क्या कर कैसा आपने क्या आपको कुछ सपोर्ट मिला, कुछ पगार भी मिला कि लास्ट में आपको साइन ऑफ करने में कितना पगार? अनम्यूट. सर साइन अप करने में हमने जो है काफी दिन तक पैसे के लिए, नहीं तो मैं 12 महीने में ही साइन अप कर देता, लेकिन सर इतना हमने काम किया था तो हिम्मत नहीं हो रही थी घर बिना पैसे के वापस जाने की हमारी. तो हमने कहा सर 1 महीना 2 महीना और सही, तो पैसा लेके ही घर जाएंगे, अब इतना काम किया है. फिर करते करते ऐसा सर कब कैसा टाइम निकल गया मालूम ही नहीं चला सर, 22-23 महीने हमारे. फिर उसके बाद यूनियन से फोन आया, घर का फोन आया कि अभी जो है जो भी सैलरी वगैरह जो क्लियर कर रहा है वो लो, साइन अप करो, बाकी जो है आपका यूनियन सपोर्ट करेगा, आप इंडिया आ जाओ. तो हमने साइन ऑफ किया. फिर एजेंट को जो है मैसेज किया, मेल किया कि सर हमारा जो है आप साइन ऑफ कर दीजिए तुरंत, हम घर जाना चाहते हैं, और आप जो भी हमारा सैलरी आप दोगे, हमारा सैलरी आप क्लियर कर दो, हम साइन ऑफ करने के लिए रेडी हैं. फिर उसने जो है अगले दिन जो है साइन ऑफ किया, हमारा होटल में रोका हमको 4 से 5 दिन. उसके बाद हमारा जो है फ्लाइट टिकट दिया हमको, सब कुछ दिया. तो सर हमने सैलरी के लिए फिर बोला, तो सैलरी बोला आपका पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा, आपका जो है सैलरी वो इंडिया में जाके आपको मिलेगा. हमने बोला अच्छा सर. तो उसने एक पेपर वगैरह बना दिया, और बना के जो है एक एजेंट का नाम लिख के उसने दे दिया यहाँ के ऑफिस का, और बोला क्या है कि जाओ, आप जाने के बाद जो है इंडिया में आपको पैसा मिल जाएगा, और बाकी ये है जो है $1,000 आपको दे रहे हैं हम लोग. हम कहे सर $1,000 सर, इतना दिन हमने काम किया 23 महीना सर, कैसे आप लोग कर रहे हो हमारे साथ? तो उन्होंने बोला नहीं अभी उतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते. तो सर मैं क्या कर सकता था सर, हमको घर भी आना था और हमको ये 23 महीना आपने काम किया और $1,000 23 महीने के बाद आपको दिया. बस सर $1,000 दिया हमको. मुंबई आने में एजेंट को जिसको कांटेक्ट करने बोला था, आपका बैलेंस पैसा कुछ मिला आपका? नहीं सर, नहीं था एजेंट ने, नहीं कुछ नहीं सर. 3.5 लाख रुपए आपने एजेंट को दिया. सी वाई वी आर रिलेटिंग. ऐसे सैयद आमिर अशरफ के जैसे कई कई अपने सीफेरर जो है, जो अभी फिलहाल फंसे हुए हैं और फंस रहे, तो दिस इज द पर्पस कि हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं अबाउट दिस इश्यूज एज कैप्टन जय कुमार has mentioned. Thank you brother Syed. Now I would ask Syed Amir is a chief cook, is a cook. Now I would ask brother Sandesh Sawant to share his experience. He is presently is the bosun. अभी फिलहाल वो bosun है with executive ship manager. Yes brother Sandesh Sawant. Good afternoon, everyone. Good afternoon, all the. Hello. Yes, go ahead. Good afternoon. Good afternoon, all the respected captain, and thank you very much, all the captains, respective captain, to sharing your precious time with us, quality time with us. So, आपकी आवाज आ रही है? बोलो. Go ahead. yeah, thank you very much, NUC secretary and NUC captain Hiran Nandani. Thank you very much for staying with us and sharing your valuable time with us. Sir, I've joined this. My name is Sandesh Vaman Sawant, and I've joined this shipping industry in 2004. I have done my pre-C from the TS Rahman Nawashiva, and I joined the executive ship management since 2006 to till 2022. I am working with the executive ship management, but it is not. I just wanted to share my knowledge. It is not very easy to get a job in such a industry, in a big company in shipping industry nowadays, because for that my time I was done my pre-C in 2004, and I get opportunity to work with the executive ship management in 2006. In between 2 years, some of the seafarers are just passing out from the training institute, and after getting the CDC, next day they wanted to job in a good company. But it is not easy to get a job in a good company. You have to search for the good company. You have to develop your learning knowledge, your spoken English.
You have to present yourself. You have to build up your quality. You have to build up your all the things which is necessary to get a job in a good company. It is thousands of people are knocking every day, each and every companies in different cities, but it is very rare person who get an opportunity to work with a great company. So my personal experience, and I would like to ask all the seafarers, don't sit at with the empty hands. When you do your pre-sea training from any such a great institute, after passing out your institute, get the good knowledge, work on your spoken English, develop for your where you wanted to go as a galley department, deck department, or engine department. Get a good knowledge, and every day you have to go to the company, and every day you have to meet the office representative. To one day you will definitely get a good job in good company. थैंक यू ब्रदर्स। संदेश, आपने कोई कंपनी में ज्वाइन होने में बीच में किसको खाचे पैसा वैसा आपको देना पड़ा या कुछ हुआ? Negative, sir. I never gave a single rupee to any agent or any brokerage charges to get a job in a good company. अच्छा, मगर आपको भी टाइम लगा, 1-1.5 साल लगा पहला ब्रेक मिलने के लिए? Sir, I spent 2 years to get a job. I finished my training in 2004 and get opportunity to work with executive ship management in 2006. My first ship was the Ocean Seneng. The office asked me to join the RPCL. So wherever you grab the opportunity, you have to do any job on the ship. Never say no to the anyone. Just grab the opportunity as quick as possible. When you ask to go on the ship, you have to present quietly, soberly on the ship. ये 2 साल के अंदर जो 2 साल में आपने कुछ अपग्रेड किया आपका स्किल के खाली चेक करते रहे, चक्कर मारते रहे कंपनी का? नहीं सर, 2 साल में I work on my spoken English. I build up my personality to how to go to the company, my dressing code and everything. How you have to go when you go to the company, how you present yourself, how you manage to touch with the people. Every day you have to go, because every day someone see you. You are coming all the alternative days or every after week. So they are thinking in their brains like he needs such a job necessary. So they will ask you, they will give you the opportunity. But I never give any single rupees to any broker. And now you are a bosun, huh? Correct, sir. I am working now bosun in same company. अभी मैं पूछूं आपको, इसी we have to relate, आपको बोसन आपको कम से कम $1000 पगार मिलता है, उससे ज्यादा ही मिलता है? More than. क्यों मैं एग्रीमेंट मैं साइन करता हूँ, मुझे मालूम है कम से कम 1000 मिलता है ना? Correct, sir. ओके, कम से कम $1000 मिलता है। वेरी गुड। सो दिस विल गिव अ फ्लेवर कि जो सुन रहे हैं, जो हमारे साथी सीफेरर जो है सुन रहे कि यहाँ पर सैयद अशाब ने बताया $500 बोल के उसको 22 महीना काम करके उसको $1000 मिला रिटर्न में, और ट्रॉमा और वो कितना, और आपको विदाउट एनी पैसा दिए बगैर आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली बिकॉज ऑफ योर दिस। थैंक यू ब्रदर संदेश, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग द एक्सपीरियंसेस। ये बहुत अच्छा आपने एक्सपीरियंस दोनों ने शेयर किया, बिकॉज दिस विल फॉर्म द प्लेटफॉर्म। कई लोग आपको देख रहे हैं, उनको भी मालूम पड़े, उनको भी धाड़स मिले। Now I would like to turn to Captain Sujit Churi, head of the Fleet Personnel Great Eastern Shipping. देखिए उनका जो टॉपिक है ना, I would like him to touch upon the best practices of employment on Indian flag. Sir, you are frozen. सब लोग फ्रोजन हो गए। यूनिसा आवाज नहीं आ रही आपकी। I think he has to log. I think he is frozen because Captain Rakesh Singh has joined. Yeah, okay. I think, okay. Captain Sujit Churi, please. Yeah. Can you complete, Danisa? We are saying something. मैं ये पूछ रहा था, I did not feel my stuck हो गया. As an Indian company, you see your topic, as we have mentioned, is the best practices of employment on Indian and foreign flagship. So as an Indian company, what do you look into when you are employing the seafarer? इसमें आप कुछ मार्गदर्शन दीजिए. Thank you. Yeah, the first challenge
being an Indian company, what you get is that anybody who comes to join the ship, he always looks for a better prospect. Like when you have a management company, foreign company, like you said, $1,000, dollar. So it's a dollar concept. But when anybody comes to Indian company, we first ask him about uska Aadhaar card hai kya, PAN card hai kya, PF में इतना जाएगा, gratuity में इतना जाएगा, तुम्हारा ये होएगा. So people are always into कि नहीं, वो जो dollar है उसमें ही जाएगा, ये नहीं जाएगा. So the concept of coming to Indian company is reduced here because इधर कम पैसा मिलता है, tax काटता है, all that thing. The induction process is same. So company always has their own institute. They develop their own cadre by training, even cadets, engineers. Similarly, for the ratings also, the company, many Indian companies are having their own batches, and they have the skilled workers developed from there. But when there is other seafarers which are already experienced outside are also a given job if they are having the proper certification, where the proper induction process has been followed. But when you work in an Indian company, there is also a progress, and as many companies know that along with the officers, the rating salary is also slowly coming to the match with the foreign companies. And being one of the biggest Indian company, I can say that in coming year, the owners have decided to match with exact benchmark with the foreign salary scale. So Indian companies are always there to give the job to the Indian seafarers who are coming, and there is no process of agents, or it's a proper procedure which follows either through the institute or for the experienced people with the induction process. There is always a fear or a risk where people will say, "Mere ko nahi mila, usne paisa khaya," all that thing. Those loose talks are always there. But a genuine company with the names of so many years of reputation is a very, very unlikely these things happen, because the processes are very stringent and very strong, and they got very less chances to have any loopholes in order to have these type of malpractices. So that's what I would like to say. But Indian companies are always there to give the best opportunities for the Indian seafarers. थैंक यू कैप्टन सुजीत सूरी साहब. और हमारे बीच कैप्टन राकेश सिंह जुड़ गए हैं. उनकी गाड़ी जो भेंडी बाजार पे अटकी थी आ गई, ट्रैफिक में फंस गए थे, मैंने बताया. तो ही इज वेलकम कैप्टन राकेश सिंह, यू आर वेलकम. आई एम कमिंग बैक टू कैप्टन सुजीत सूरी. आपने बताया इंडियन कंपनीज में चैलेंजेस होते हैं, सोच जो रहती है, मगर कैन यू शेयर आपकी कंपनी में आपका रिटेंशन लेवल कितना है? रिटेंशन जो रहता है ना इंडियन कंपनी में, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है इंडियन कंपनी में एक दो ट्रिप मारा फिर फॉरेन फ्लैग में जाता है. यस, एवरीबॉडी वांट्स बेटर प्रॉस्पेक्ट, बट देयर आर स्टिल सम कंपनी जिनका रिटेंशन, इंडियन फ्लैग कंपनी जिनका रिटेंशन लेवल अच्छा है. आपकी कंपनी में क्या है सर? जस्ट फॉर information. Yeah, at present, its retention is different for different ranks, but mainly when we are looking in because we have your own trainees coming, so till OS level, we have always retention between 87 to 90%. But when you become a skilled worker, like when you become a seaman helmsman or you become a watchkeeping rating, you start comparing with the better I would say things in the market. So there the retention is dropped. It has at present we are between 78 to 83%. What in the watchkeeping level I would say, which we always want to have it 90% or as per OCIMF requirement. So, but if you come the salary in the same way, the retention will remain. Nobody would like to leave it, because the Indian owner will go out of his way. Anywhere in the world, he will bring the ship to India if any problem, like what we did it in China. So that is the best thing what I can say about the Indian owner. But Abhi, you can say 85 is the average, we can say. 85 भी काफी अच्छा है. ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ इंडियन कंपनी में खाली 2-3 ट्रिप मार के. There is a retention there, and thank you for that. I would now like to turn to Captain Sankalp Shukla.
मैनेजिंग डायरेक्टर बर्नार्ड शुल्टे प्लेटफॉर्म बना दिया कि इंडियन कंपनी के ऊपर चैलेंज है, फॉरेन फ्लैग में लोग जाते हैं, तो हाउ इजी और हाउ डिफिकल्ट इज इट to for a foreign flag owner or for the foreign flag company to recruitment, आपके procedures क्या है, amongst other things you want to share, ये भी आप बताएं how difficult or how easy it is to get give employment to our seafarers. Thank you, Captain. Thank you, sir. Thank you. Let me first start by this is a right forum to actually thank our seafarers for the immense work, the immense patience that they've had in the last 2 years. We can only imagine what hardship they've been through, but I must commend that our seafarers have been extremely professional in the last 2 years to keep the world trade going. So let me first start by thanking all our beloved seafarers for the work that they've put in the last 2 years and continuing to do so. Now, coming back, I think the perfect example for gaining employment in a foreign company is Mr. Sandesh. He spoke about, yes, there are difficulties initially getting a job, but you need to be resilient. You need to build on your skills. You saw him speaking in English, very fluent English. So he did something which is known as self-development. Foreign companies, job opportunities for Indian ratings is available. Now it is even growing as we speak. It has been growing in the past year. It is going to continue to grow. But foreign companies, many of us have ships which have multinational crew. So language is a big barrier that comes in. Like when you have a full Indian complement, despite the working language per se being English, you see that people communicate in Hindi, everybody understands everybody else, and it is fine. But on a multinational ship, it turns out to be a problem if your communication skills, your English speaking skills are not all that great. The other thing is, it is completely competence based. When of all the foreign companies that I know, they have their own intake procedures. They look at ratings who are coming from reputed institutes such as NUSI, TS Rahman, and such on. So they know that your base of your training is strong. Thereafter, they have their own testing procedures. You've got various kinds of tests that are Videotel has developed something known as SETs. There is SEP, and these are basic questions to find out if your base level is strong. Once you clear that, then of course there is an induction process for you to understand what the company policies are, procedures are, norms are. Now, coming back to the issue of agents, we've had multiple times we have people standing on our doorstep or calling us and saying that, sir, we are supposed to join such and such ship. And we are like, who are you and who told you you're joining such and such ship? Sir, such and such agent told us. I said, what agent? Do you not see most of the companies who put out ads? It is very clearly stated in bold. We do not deal with any agents, or the company does not have any agents externally. No, sir, but he said that no, he is actually working for BSM, but he has to go out and search for people. I said, our response to that was, if you've got the understanding that he told you you're joining such and such ship with such and such company, you are now calling the company or you're coming to the office. Prior giving any money, why don't you verify? Why don't you verify? And it is not that all foreign companies are I would say that they should look at employment with standard companies. Now, even the other gentleman, I forget his name, who started off, Mr. Syed. Mr. Syed also thought he's joining a foreign company. But I mean, foreign company is any company that has any foreign flag ships. Like, for example, he thought he's joining a ship in Iran, a general cargo vessel in Iran. Do a background check of the company that you're going to be joining. Are they a genuine company? Yes or no? And in today's day and time with the internet, it is all available. Again, any foreign company that is a standard company pays standard wages. We all have proper agreements in place, and the payment is as per that agreement, because we are trading worldwide. We are answerable to ITF and various other local unions. So we have union agreements in place.
or even if we do not have agreements in place, our salaries are either in line with the union agreements or over and above that. So the minute you come to know that you are going to join, per se, take that example as a chief cook for $500, that should ring alarm bells. I mean, even starting with that somebody is asking you to join a company by paying 3.5 lakhs. And what is that company? So people need to be cautious. And I keep telling people, agents are there because we are willing to pay. The day the willingness to pay stops, the agents will die a natural death. Thank you, sir. थैंक यू कैप्टन संकल्प शुक्ला साहब, आपने जो एंगल दिया कि बाहर एजेंट है और बाहर से एजेंट गिरी कंपनी का कोई लेना देना नहीं है. देयर आर मेनी पीपल, मेनी एजेंट्स हु आर डूइंग अ बिजनेस, एक आशा दिखा के कि भाई ये कंपनी में हमारी अच्छी है, हमारा बहुत चलता है ये कंपनी में. सो वी वुड एडवाइज द सीफेयरर्स कि आप यू शुड बी मोर अवेयर. अभी मुझे एक क्वेश्चन भी आया, सीफेयरर्स आर पुटिंग देयर दिस थिंग ऑन द फेसबुक चैट्स में भी आप क्वेश्चन डाल सकते हैं. एक सीफेयर ने डाला है, विपुल केलुस्कर, सर आई एम आल्सो विक्टिम ऑफ एजेंटगिरी. बेलापुर इज हब ऑफ एजेंट्स, नो यूज लॉजिंग कंप्लेंट्स, FIR, please guide me. So this is the specific question there are which has come in. So I would, we'll take the question answer later, but I just want to flag this. बेलापुर and काफी जगह पे हब ऑफ एजेंट की, वेरी इतना चलता है कि लोगों को लगता है कि ये पैसा दिए बगैर काम ही नहीं होने वाला, एंड दैट इज हाउ दे लैंड अप इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. थैंक यू कैप्टन संकल्प शुक्ला. वी वुड नाउ ये एजेंट का जो अपॉर्चुनिटीज जो है, जैसा कैप्टन छुरी ने भी बताया, संदेश ने भी बताया कि अपॉर्चुनिटीज है. आई लाइक द वे संदेश पुट इट. अपॉर्चुनिटीज है, ले लो. बिरयानी खाने का टाइम आएगा, अगर अभी सामने दाल चावल है तो दाल चावल ले लो. ये अपॉर्चुनिटीज रहता है, बट मैनी सीफेयरर्स आर नॉट अवेयर ऑफ दोस अपॉर्चुनिटीज कि भाई इसी उनको खाली ये है कि फॉरेन फ्लैगशिप, फॉरेन गोइंग, ये. आई वुड नाउ रिक्वेस्ट Captain Rakesh Singh, okay, he just share some job opportunities, opportunities के बारे में अगर आप मार्गदर्शन करेंगे. Captain Rakesh Singh, welcome once again. Captain Rakesh Singh, for the opportunities in the cruise and the offshore. यहाँ पर भी काम होता है, पगार भी मिलता है, good standard companies are there, but people are not aware or they are obsessed in only going in foreign going. हम जाएंगे तो सिर्फ इंडिया चाहे, आउट ऑफ इंडिया का जहाज में जाएंगे. तो कैप्टन राकेश सिंह प्लीज ऑन द अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन द कोस्टल एंड द ऑफशोर प्लीज. थैंक यू. Anyway, thank you so much for the invite and good afternoon everybody. I see all distinguished gentlemen from the industry are present. और इसमें जो अपने सीफेयर बच्चे वो भी सुन रहे हैं बात हमारी, कैसे हो रहा है सर? ये फेसबुक पे और यूट्यूब पे लाइव है. Okay, और जो बोलने का उनको भी हक है, सवाल पूछने का बिंदास. बिल्कुल बिल्कुल हक है, जो बोलने का वो बोल. नहीं बिल्कुल अच्छी बात है, वही जानना. लॉ एंड ऑर्डर नहीं होना, लफड़ा नहीं होना चाहिए. बाकी जो बोलने का है बोलो, और उनको भी हक है, वो भी बोलेंगे. वो तो मेन ऑडियंस जो है वो है, वो है. यस, मैं अपना ज्ञान बांटते रहते हैं, लेकिन मेन ऑडियंस वो है. यानी मैं आप जब भी कोई प्रोग्राम करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ बड़ी स्पेशलिटी विशेषता होती है, और जब आप किसका कोई सब्जेक्ट चूज करते हैं तो वो भी एक अलग होता है. आज आपने कॉम्पिटेंसी वर्सेस एजेंटगिरी कहा है, तो मुझे लगा जैसे कुछ बच्चे अगर टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं कि आई एम अ कॉम्पिटेंट सीमन, आई डोंट नीड अ मिडिल मैन. नो, आई एम अ कॉम्पिटेंट सीमन, आई डोंट नीड अ मिडिल मैन. तो वो एक नूसी का अपना पंच है कि भाई अगर तुम कॉम्पिटेंट हो तो फिर मिडिल मैन की क्या जरूरत है. लेकिन भाई सच्चाई है कि मिडिल मैन इज अ रियलिटी of this nation, not only in our sector, in any sector you look at it, people are promising jobs to go to Gulf or go to outside India or within India. तो ये एक सच्चाई है. और आपने जगह का नाम ले लिया, वो बेलापुर या वेलापुर जो बोलिए, वो भी एक अपने आप में हब है. सभी लोग लगभग जानते हैं इस बात को. और also there is a situation of supply and demand, तो वो एक गैप भी है. और मैं अपने बच्चों से, भाइयों से ये कहता हूँ कि जो लोग आते हैं ये ट्रेनिंग करने के लिए, जहाज ज्वाइन करने के लिए एज सीफेयर, रेटिंग, पेटी ऑफिसर, हमेशा मिडिल क्लास या परिवार से आते हैं, जो कि बहुत वेल टू डू परिवार नहीं होता है. और लोग, जहाँ तक हम लोग जानते हैं, कुछ लोग अपनी जमीन खेत बेचकर ट्रेनिंग का पैसा देते हैं,
माँ बाप घर के अपनी ज्वेलरी या जेवर बेचकर भी वो लोग आते हैं, तो बड़े संघर्ष मुश्किल समय से आते हैं, तो उनकी भी जो मानसिक स्थिति है, मेंटल स्टेट है, उसको भी समझने की आवश्यकता है कि उनके अंदर कितना डिस्परेशन, कितना उबाल होता है कि भाई जल्दी से कुछ मिल जाए, और फिर उसका फायदा उठाने के लिए लोग मिडिल मैन और एजेंट हमारे चारों तरफ रहते हैं। तो ये सब सच्चाई है, लेकिन इसमें एक और एक विषय है कि आप जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जितने हिंदुस्तान में हैं, मैं स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा कि आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, फॉस्मा का, मासा का है, लेकिन जो बाकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उनका एडवर्टाइजमेंट भी ऐसा आता है, $1000 की नौकरी लो, अर्न इन डॉलर, ट्रैवल अब्रॉड, सीधा ट्रेनिंग के बाद आपको सीधा वहां जाना है। तो जिस दिन से इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं उनके माइंड में ये कह दिया जाता है कि भाई बस ट्रेनिंग खत्म करो और सीधा $1000 की नौकरी जो है वो हाथ में आने वाली है। तो उनका माइंड भी उसी तरह से ग्रूम हो जाता है, चलता है। तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का भी एक रोल है इसमें कि लोगों को सच्चाई से थोड़ा वाकिफ कराना, और कैसे एक मैं आपको एक बताता हूँ बात कि हमारे पास टग्स थे जो पोर्ट में ऑपरेट करते थे, तो बड़े बड़े जहाजों को बर्थ करते थे, तो लड़के टग पे जो काम करते थे हमारे, तो वो बड़े जहाज की तरफ देखते रहते थे। तो हम अक्सर, कभी मैंने देखा, अगर मैं जहाज पे हुआ था, मैंने पूछा भाई क्या देख रहे हो, तो बोला सर इस जहाज पे जाना है एक दिन। नाउ दैट इज नेचुरल, हर आदमी एस्पिरेशनल है, ये जायज है, इस तरह की सोच रखना, बिल्कुल ग्रो करना चाहिए, ही वांट्स टू डू इट। लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि ऑफशोर सेक्टर जो आपने बोला, या कोस्टल सेक्टर जो हमारा है, कंपैरेटिवली इसमें सही है कि वेजेस वगैरह फॉरेन गोइंग की तरह नहीं है, फॉरेन शिप की तरह नहीं है। और हमारे किसी कोलीग ने हैड वेरी वेल सेड दैट when people hear about income tax and PF and this and that, they think no, this is a very complicated affair. मैं एकदम clean cut per month उसमें जाना चाहता हूँ, जॉब में जाना चाहता हूँ। बट मेरा इन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बजाय कि किसी एजेंट के चक्कर में फंसकर, जिसमें कि 95% लोगों को धोखा होता है, एक तो आपने पहले ही खेत बेचकर और ट्रेनिंग की, और फिर आप और कुछ बेचकर लाए और 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया दिया, और 95% जो इसमें धोखा होता है, उसके बजाय वी हैव 1040 कोस्टल शिप्स इन इंडिया। 1040 कोस्टल जहाज हैं इंडिया में। कोस्टल जहाज में ठीक है कि उसमें 10 लोग रहते हैं, किसी में 20-25, डिपेंड किस तरह का जहाज है। लेकिन एक और अच्छी बात है कि छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो टर्नओवर बहुत ज्यादा है। आप छोटी बिगनिंग करें, बजाय कि आप सीधे ही एक बार में पहली बॉल पे छक्का चौका मारने वाली बात पे ना पड़े, 1 रन 2 रन लेके अपनी पारी जैसे बिल्डअप करते हैं लोग की धीरे धीरे बढ़ाते हैं, आप उस तरह से खेलें। और कोस्टल जहाज पर अपॉर्चुनिटीज हैं, और छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट भी, 1 कॉन्ट्रैक्ट 2 कॉन्ट्रैक्ट आप करें। एक तो आपका अपना खुद का घर का पैसा नहीं जा रहा है, और आपको जो है कि पगार भी मिल रही है, एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, और वहां से जो है चालू रहे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एक और रहा है गनी भाई, कि मैंने देखा है कि ऑफिस में लड़के आते हैं और आप उनसे बोलिए कल आओ परसों, क्योंकि ऑफिस में लोग और चीजों में बिजी रहते हैं, तो अगर 2-4 बार आके चले जाते हैं, और आप अगर हमारे यहाँ तो ये रेगुलर केस है, और अगर आप पैसा नहीं मांग रहे हो तो बाहर जाके बात करते हैं कंपनी बेवकूफ बना रही, नौकरी नहीं देगी क्योंकि ये पैसा नहीं मांग रही। ये इतनी बड़ी सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे लड़के बताते हैं मुझे कि सर वो तीसरे दिन बोला जाओ बेवकूफ मत बनाओ, टाइम खोटी मत करो यार, पैसा वैसा भी नहीं मांग रहे, तुम क्या नौकरी दोगे। तो ये बात भी ध्यान, नया पॉइंट है, नया एंगल। हाँ नहीं ये हुआ पॉइंट है। फिर उसके बाद वो जब भी वैकेंसी 4 महीने 3 महीने 5 महीने बाद उसको वापस कॉल आया, तो उसको विश्वास नहीं होता तब भी कि ये वाकई में दे रहे हैं, या फिर ऐसे टाइम पास के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए बुला रहे हैं। तो माहौल इतना खराब है, ये भी बात है, सच्चाई, इसको जानिए। तो भाइयों, मेरा कहना आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है, जब आप अवश्य बिल्कुल जाएं, फॉस्मा, मासा, फॉरेन गोइंग, फॉरेन फ्लैग में जाएं जब मौका मिले, लेकिन तुरंत सहवाग की तरह पहले बॉल पे दूसरी बॉल पे छक्का न मारें, सुनील गावस्कर की तरह खेलें, 1 रन 2 रन लें धीरे धीरे इनिंग में, जिसके लिए कोस्टल शिप्स बहुत परफेक्ट हैं। ओनर भी इंडिया में रहता है, आपको चीट करना मुश्किल है, आप अपने घर और देश से दूर भी नहीं जा रहे हो, और आपको तजुर्बा मिल रहा है और कुछ पैसे भी मिल रहे हैं। तो लगे रहो मुन्ना भाई वाला एटीट्यूड होना चाहिए, स्मॉल बिगिनिंग करिए, सर्कुलेशन में बने रहिए। तो वैकेंसीज हैं, और हमारा तो गनी भाई ये रहा है कि हमारे जो रेटिंग का जो पार्ट है, वो हमारा सबसे ट्रस्टवर्दी, सबसे रिलायबल पार्ट है। समटाइम्स वी गेट फेड अप विद द ऑफिसर्स ऑन बोर्ड,
बिकॉज हमारे पास भी वही हाल है कि ऑफिसर्स तो सब चले जाते हैं संकल्प भाई के यहाँ या रामनगर साहब के यहाँ, तो हमारे वहां तो नीचे से बचे हुए आते हैं, तो वो काम कम ज्ञान ज्यादा, तो ये लड़के चलाते हैं हमारा जहाज, और ये लड़के हमारे साथ 8-8, 10-10, 12-12 कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जाते नहीं है। तो अवेयरनेस बढ़नी चाहिए, और लोगों से कुछ आप ऐसा रखिए कि कॉल सर्विस रहे जहां पर वो पता कर सकें और इंफॉर्मेशन ले सकें और इस ट्रैप में ना फंसें। दे आर कॉम्पिटेंट, दे डोंट नीड मिडिल मैन। थैंक यू। Thank you, Captain Rakesh Singh. Sir, I would like to ask at this point, ask a question to Captain Jaikumar sir. Sir, जैसा इन्होंने बताया छोटे जहाज है, challenges okay, but vacancies are there, but seafarers are reluctant to go on the small ship. वो बोलते बाद में एग्जाम देने में दिक्कत आती है या प्रोग्रेशन नहीं होता अगर ये छोटे जहाज में जाते तो। Any guidance on that, Captain Jaikumar sir, please? थैंक यू गनी साहब। ये गलत है कि उनको सी टाइम नहीं मिलता है, प्रोपोर्शन है, दीज आर डिफाइंड इन आवर STCW रूल्स कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल्स में जो क्या रेशियो में मिलता है, बट हर जहाज में देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सी टाइम। एंड जो राकेश साहब ने अभी कहा है, इट इज बिकम सो रैम्पेंट एंड इट इज नॉट सरप्राइजिंग कि अगर कोई कंपनी नहीं लेता है तो पीपल थिंक दे आर नॉट serious. The reality is what we hear in the government is that without paying, and the amounts now are not small, काफी high amount मांगते हैं जो कहा जाता है, तो it is absolutely essential now कि इंडस्ट्री इसमें कुछ स्टेप्स ले जिससे कि उनका नाम बदनाम ना हो, जिससे कि the seafarer knows कि उनको ऐसे टोपी पहनाया जा रहा है मिडिलमैन से, एंड हकीकत में इसका जरूरत नहीं है। तो आई थिंक वेरी वेरी एसेंशियल जो आपने ये आज सेमिनार करवाया है, एंड आई होप दैट नॉट ओनली ऑन फॉरेन गोइंग, इवन ऑन द कोस्टल शिप्स पीपल विल कम। इसमें सी टाइम का तो ऑलरेडी है हमारे रूल्स में। थैंक यू। Thank you, Captain Jaikumar sir. So I would now, since we are going into the flow, I will turn to Captain Mr. Prasad Hariyan later. But because we have already touched on the offshore, I would like to request Captain Nilesh Kalyanpur to touch on the opportunity, job opportunities in the tugs और हार्बर क्राफ्ट जो क्राफ्ट के अंदर है, क्योंकि जैसा पता है लोगों को मालूम भी नहीं है कितने लोगों के पास वैकेंसीज है या मालूम है तो संकोच कर रहे हैं। तो प्लीज शेयर योर थॉट्स कैप्टन नीलेश कल्याण। थैंक यू। Thank you, Gani Saab, esteemed panelist, distinguished panelist, and my fellow seafarers. So, Captain Rakesh Singh has very well articulated what is the situation on the coastal. Almost on We are not able to hear you, Captain. आपका अगर वीडियो अगर बंद करके आप आ सकते, because you're not similar breaking position and progress. So, okay, let me change my internet. I think my internet is low. Yes. Can you hear me? Yes, very well. Thank you. Okay. All right. So, related the situations on the offshore and coastal. So on the tugs also, we are more or less after they move on to the foreign sectors, which is quite normal, and there is a lot of turn on the Indian coast. There is an advantage working on board the tugs, as well as there is a disadvantage. Maybe the tugs are due to the smaller in size. There is slight difficulties as far as the living conditions are there. There is a little bit of compromise that needs to be done. But the advantage, people are almost close to the coast, within the port limit. They are in very continuous touch with their families on a daily basis.
sign-on, sign-offs is at a very short notice. So companies are also very on the tugs, and as well as far as the sea time, Captain Jai Kumar has already said, sea time is available. Maybe a little more may be required. They may have to have a combination of sea time going on a cargo vessel to qualify. But job opportunities are there. They are available and fill in. I think कैप्टन नीलेश कल्याणपुर उनका जरा बैंडविड्थ का इशू है, बट एज ही मेंशन, मुझे उनको खास एक पूछना था कैप्टन को कि ऐसा पगार जो है, एक साइज ऑफ द वेसल तो टग्स है, हार्बरक्राफ्ट ही है, मगर डेफिनेटली देयर इज समथिंग टू लर्न ऑन दोस शिप्स आल्सो, रादर देन रिमेनिंग आइडल। घर में बैठे बैठे कम से कम जाके आप कुछ सीख सकते हैं ना, whether it is a coastal or offshore or at least the tugs of this thing. Captain Nilesh Kalyanpur, I think. Yeah, that is true, Gani Sahab. Instead of just staying idle at home, this is a stepping stone. The tugs, coastal crafts are a stepping stone. People can take advantage of these stones. There is a huge coastal fleet available out here. So they can use this, seafarers can use this instead of sitting at home or going to agents and all that. They can use this gainful employment, take their sea times also, and you can have a very good career progression. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Captain Nilesh Kalyanpur. We now turn to Mr. Prasad Hariharan. साथियों, जब शिप जहाज में नौकरी की बात आती है तो लोगों को ऐसी लगता है सिर्फ और सिर्फ कार्गो शिप्स है, मर्चेंट शिप्स है, ऑफशोर है, होम ट्रेड है, कोस्टल है, टग्स है, बट देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी ऑन क्रूज शिप्स, पैसेंजर शिप, जिनके बारे में सीफेयरर्स को ज्ञान भी नहीं है, और ज्ञान है तो कैसा जाने का on those passenger ship, because the number of Indians, because after Philippines, India is at number 2 as far as employment on passenger cruise ship is concerned. This is a big area. I would request Mr. Prasad Hariharan to please share his thoughts on the opportunities on the cruise ships. Thank you. Ganisa, first of all, thank you so much for inviting me. And thank you so much for my industry colleagues for giving the time out here. So before I even go into the topic of opportunities on cruise ships, which, as you said, are many and increasing, I just wanted to give my thoughts on these. I won't even call these people agents, because agents is a very credible word sometimes. These are touts. These are, हिंदी में बोले तो दलाल है जो यहाँ पे ये जो काम करते हैं. So I'll give you an example of how people get cheated. So there was a time when one guy just walked into my office and spoke to me generally about भाई recruitment कभी शुरू हो रहा है, blah blah, general talk. And then I gave him whatever responses generally I give. That you have to go onto our website, we advertise, and social media website, and then he walks off. And then as he goes off from the office, he gestures to two people who are standing out there saying that आ जाओ. So immediately ऐसा कुछ होता है ना तो घंटी बजती है, कुछ गड़बड़ है. So I chase after this guy, shout out to him. He pulls these candidates and walks out of the office. And I shout, saying that isko paise mat dena. Okay? These two candidates come back and say that, thank you so much for telling us, shouting, because ये बंदा बोल रहा था कि मैंने बात कर लिया है बिग बॉस से, आपकी नौकरी पक्की हो गई और आपको पैसे देंगे. So even if, there are many instances where
the company, its management or employees are not involved in any such hera-fairy, but there are gullible people out there who fall for this, and the agents or touts even go to the extent of saying कि भाई आपको नौकरी नहीं मिली तो हम पैसे वापस कर देंगे आपको, ठीक है? And they retain their credibility in a bad sense. So it is for all our seafarers to understand that if they get a job, they get it on merit, on competence. And they do not have to pay any money to anybody. Okay. And if they are paying to these agents who are breaking all the rules of the Merchant Shipping Act and everything, we need to name and shame them. We need to share this information among our industry colleagues, among the DG shipping authorities, encourage people to lodge complaints with the police, support them in lodging the complaints with the police so that these touts can be brought to book. Okay, so that's one thing which I wanted to talk about. The second is opportunities on cruise ships. Cruise ships are very, very labor intensive. If you have a general cargo container vessels, you have about 14, 20, 25 people on board. On a cruise ship, you have about 800, 1,000, 1,200 crew. So the opportunities are many. Primarily, we hire people with people who aspire to work in the hotel trade, people who have got experience in hotel shoreside or have education in hospitality. But we also have a deck and engine side where people are required, ratings officers are required to run the ship. So those opportunities are also there. Salaries are very competent, but as Captain Shukla said, one of the primary requirements for us is English competency. If you are able to speak English, we only look at, for entry-level positions, we look at people who have passed their 10th standard, okay, who have done their STCW courses, who have got a minimum of a year's experience working in a decent hotel shoreside, can come and apply to us at entry-level positions. Now, people need to understand that entry-level positions are not bad place to start. Most cruise ships rely on internal promotions. So they absorb people at entry levels, okay? And then they rise up in the organization. So if you are getting an opportunity to join a cruise ship as what we call hotel assistant or a galley assistant, you go out there, you wash pots and pans. You must have worked as a waiter out here, but you don't get a job directly as a waiter on board a cruise ship immediately. So you start at the lower level, work your way up, because promotions are purely on your appraisals, on your merit. And that's how, I'll give you my example. I joined this company 30 years ago in 1992. And the job that I had at that particular time was in the garbage department. Okay. I worked in the garbage department, responsible for, in the old days, the old ships did not have incinerators. We used to pack garbage. We used to compress the dry garbage. We used to, Marpol at that particular time allowed dumping of garbage, which is biodegradable if you are 5 miles away from shore. Okay. We used to do all that. I used to jump on board skips, the big containers, to put the garbage down so that, you can put more bags in. Now, if I had not taken up that opportunity 30 years back, I don't think I would have become the managing director of the biggest employer of people on cruise ships from India. So I think you need to realize that there is dignity in labor. People need to start at the entry levels,
even at entry levels, you actually will get more salary than if you do the same job in a shore hotel out here. That's the charm of international workforce. So yes, encourage all people to learn English, apply, and please, please, all the reputed cruise companies use websites to source applications. Do not go through agents, whatever they promise. Okay? Go through a proper channel. And if at all you find that there are people who are sort of taking money, talk about it to the right people. Come back and talk to, if my company, if somebody is saying that you give me a job, give me money, I'll give you a job in this company, okay, Carnival Support Services, come back and tell us. We'll do our best to support you in lodging a complaint and taking this further. So, Ganisa, that's what I have to say. Thank you so much again for the opportunity that you have given me. Thanks a lot. Thank you, Shri Prasad Hariharan. While since you're there still on, I would like to ask you a question. Okay, you did mention about the fraud, but how to identify? अभी ये तो आपने देखा आपके से बात करके चर्चा करके बाहर निकल. How to identify a fraudulent agent? Okay. वो टिप्स है क्या? पहली बात तो आजकल क्रूज लाइन के इसमें एजेंट्स के बगैर देयर इज अ नाइजीरियन फ्रॉड. ईमेल्स आते हैं. अच्छा. भी ईमेल्स आते हैं saying that this is your contract, we are offering you this particular restaurant manager job. Your salary is going to be $3,500 for processing your papers. Please deposit $350 into this bank account. Okay, and people go ahead and deposit this money because for them $3,500, अरे वाह, बहुत अच्छी salary है. So 350 ठीक है ना, one time cost है. But these are people which is obvious frauds. Okay, so we created a video on how to identify a fraud job offer. And it's like, we put it on our YouTube channel so people can go out there, have a look at how to identify a fraud channel. Generally, one of the key things is it will never have the domain name. Email जो है, वो usually Gmail, Hotmail, वगैरह वगैरह होता है. Company का email होता ही नहीं. So this is one way, and there are other ways of identifying what a fake job offer is. और ये जो agents बोलते हैं, simple thing is there are no agents who work with reputed companies. Companies deal directly with candidates. हम इतना भी बोलते हैं, जब भी लोग आते हैं यहाँ पे, we give them a briefing saying that your uncle, chacha, mama, whoever would have referred you to this particular company, but that reference stops once you enter the gates. From here onwards, if you are getting a job, it's on your merit. And if you still go back and reward some of these touts who are waiting outside, you are the dumbest guy or girl in my industry around, because you got your job purely on your merit. Why are you rewarding anybody else? I think you answered that question, because there was a question from Manish Tandel. When I approached agent, he told me he's connected very well with the companies. तो आपने जैसा बताया, एक impression create करते हैं, agent. So this was the question from Manish Tandel. Sir, Jaikumar sir, I just want to, because I have a question for Captain Sujit Churi and Captain Shukla. But before that, Jaikumar sir, it was mentioned FIR lodge karo, and but it does not go to any logical conclusion. अभी पहला तो FIR lodge करने में लोग सोचेंगे. You did mention the section of the Merchant Shipping Act about fraudulent agent. Anybody asking, that is what the section is about. तो इसमें FIR, तो यहाँ तो FIR lodge, who takes it to the logical conclusion? तो इसमें और कुछ सरल तरीका नहीं है, sir, Captain Jaikumar sir. Sab, it is, I think, a very valid question, which all of us are grappling with.
employment outside India, we need to understand the aspects. Normally, if anyone has to go out in the ancient days, there is something called as an immigration clearance required. After that, there has been the requirement for different sectors have been removed. That means, like in the shipping sector, different sectors would have approached the Ministry of External Affairs saying that there is a employment opportunity due to which we must reduce this. And in our sector, it has come, if you are having a CDC, you don't need to have immigration check required. Now, if you go through the Immigration Act, anyone who is employing people outside India, there is a substantial procedure that they need to follow. If you will see, even their advertisements have to give their details of their permissions that they have. In our sector, since this immigration check requirement is being waived off for us because of the CDC requirement that we have, possibly first and foremost, we need to have a mechanism that anyone who is employing, we did have that in RPSL that is there. But what we are seeing, there are people who are not RPSL license holders also are able to entice people to come forward and pay them money in the hope of getting job. They go to the police, obviously they have a lot of clout with the area they are in, nothing happens. If IPC has to be invoked, it has to be through the police. If MS Act provisions have to be invoked, then it is the MS Act authorities. But the MS Act penalties are marginal, which would not really be a deterrent. So possibly something in between. And that is where the unions, I think, should play a substantial role, because they need to have, be it the MUI or the INSA or any other union that is there, they need to have dedicated cells with specialist lawyers, I would say, or people who have qualified to practice law, who will assist these people, because ultimately whoever files the case, he will have to follow it up with the police. So organizations that are having the wherewithal or wanting to do something, they can set up in their organization specialized cells wherein any such case assistance can be given. Like Prasad Hariharan Saab said, and Shukla Saab had said earlier, that they help the boy take up steps whatever is needed. That is from the companies whose name is getting tarnished. Possibly an institutional mechanism amongst the various unions that is there, and come up with a third party NGO who will assist these boys to take it to the logical conclusion. अगर आप सिर्फ फाइल करेंगे वो उसे ज़्यादा जाएगा नहीं, इसीलिए उसको कंटिन्यू फॉलो करने के लिए you need to have dedicated people for that is my personal view. I think this will be one of the takeaways of this particular webinar, institutionalized support. We cannot expect a seafarer, okay, उसने पैसा दे दिया है, वो ऐसी परेशान है, वो थोड़ी FIR जाके lodge करके. If we have some institutionalized support, definitely it is a way forward. We will look into that seriously. One question to Captain Sankalp Shukla and Captain Shuri. ये एक सवाल आया है, means people, जैसा Captain Rakesh Singh ने, Captain Kalyanpur ने बताया, if you take on the offshore में जाओ, tugs में जाओ, coastal में जाओ, मगर main fleet में जब भी जाते हैं, whether it is a foreign flag or foreign going ship, तो अक्सर लोग कहते हैं, अरे तुम छोटा जहाज में जाके आए, कोई दूसरा जहाज में एक ट्रिप मार के आओ, वो लॉलीपॉप देते, लॉलीपॉप, एक ट्रिप मार के आओ, फिर तुमको हम लोग लेंगे. तो जो मेन फ्लीट वाले, particularly the foreign going and the foreign going ships or foreign flag, छोटे जहाज का लोग वैल्यू करते नहीं,
कि तुम जाओ एक ट्रिप मार के आओ, तुम बहुत अच्छा आदमी मगर एक ट्रिप मार के आओ. Would Captain Sankalp Shukla want to respond to that, please? Yes, sir. I think we've recently addressed that issue, and there was a genuine issue why why employers said that people coming from tugs or offshore vessels, there is resistance for them being employed on the regular vessels. One was, of course, the watchkeeping duties are much more stringent on the cargo vessels while out at sea. There is a difference in steering. So then, of course, there are cargo operations which are not being carried out on tugs. There's preparation of holds, tanks, and things like that. But recently, if you remember, we had that meeting with DG Shipping, and I really appreciate the initiative taken by NUSI in quickly developing the bridging course from offshore to the main fleet, with the main focus on watchkeeping, on steering, and on cargo operations. So with this bridging course, like I mentioned earlier, what Mr. Sandesh did during the 2 years was he built on his own profile. Now here, NUSI has given it to our seafarers on a platter. So you can see more migration now taking place from the offshore segments, from the tug segments onto the main fleet. So I really appreciate the efforts taken by NUSI over here. I really appreciate that meeting that we had with DG Shipping, where it was agreed that something like this needs to take place. Thank you, Captain Sankalp Shukla. Captain Shuri, आप जरा मार्गदर्शन की, आपके पास तो सब एक ऑफशोर भी है और मेन फ्लीट भी है, तो उसको इधर से लेके इधर नहीं डाल सकते आप, क्योंकि वेरी फैक्ट एक ट्रेनी, सर ट्रेनी ने तो जहाज भी नहीं देखा, ट्रेनी को अब हम लोग डालते फॉरेन गोइंग, फॉरेन फ्लैगशिप में ट्रेनी, तो ये ऑफशोर वाले का तो ज्यादा एक्सपीरियंस है ना. I can tell you that yes, we give the breaks 100% because we have our offshore, we have our when you say Indian company, matlab the ships are all foreign going only. So only thing that direct exposure dene ke jagah pe we give them a first break on the coast where the exposure is little less before we put them on a foreign going run, because suddenly a man who's on a tug, who's never done a steering, you cannot give him the Suezmax ka steering. So those tests have been carried out. He's been trained, simulator training karke, then he's been put on a coast run ship, and then he's been graduated to the outsider ship. So break is given. There is no doubt about it. Thank you. I think we'll come to a close of our session, but उसके पहला मुझे पूछना, I would like to ask Captain Rakesh Singh particularly. देखिए जो अभी फेसबुक पे जो हमें देख रहे हैं और वो आगे भी ये वीडियो देखेंगे, इसमें कई 100 सीफेरर्स है जो अभी फंस गए. ओके, या उसने 3 लाख दिया, 2 लाख दिया, 4 लाख, जितना भी. ये ओपन सीडीसी जो है ये और एक दूसरा प्रॉब्लम है, क्योंकि ओपन सीडीसी लेके नौकरी नहीं होती. जब 6 महीने का ट्रेनिंग करके लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो इससे ओपन सीडीसी लेके नहीं होती है, और कई लोग फंस गए. दे वॉचिंग अस, तो उनके लिए क्या मार्गदर्शन हम करें? उनका 3 पेटी 2 पेटी चला गया, अभी उसको बोलेंगे वो सरमन्स और वो सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आए, उनको हम क्या मार्गदर्शन कर सकते? कैप्टन राकेश सिंह साहब, जो फंसे हुए ऑलरेडी फंस रहे और दलदल में फंस रहे, घुस रहे. जी, ऐसे बहुत से केस आते हैं हमारे पास, और उनको हम फिर कोई जगह देते हैं करियर शुरू करने की, तो कोई नई बात नहीं है. लेकिन मैं आपकी चीज पहले जो पुरानी जो डिस्कशन अभी उस पर एक चीज ऐड करना चाहता हूँ. एज बीइंग शिप ओनर ourselves, शिप ओनर रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली सिटिंग इन इंडिया, थोड़ा डिसीजन मेकिंग हमारे लिए इजी है, थोड़ा बोल्ड भी है और कमिटमेंट ज्यादा है. अनलाइक कि आप एज ए मैनिंग एजेंट हैं और ओनर इज सिटिंग समवेयर आउटसाइड, तो आपको बहुत डिपेंड करना पड़ता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चॉइस. मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं. हमने 2 साल पहले शुरू किया, बिकॉज वी ओन ऑपरेट लॉट ऑफ इनलैंड वेसल्स. अभी इनलैंड वेसल सुनने में है, लेकिन 2-2 टैडी 3-3 हजार टन के जहाज हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे जहाज हैं. और बाकी सारी मशीनरी इक्विपमेंट लगभग वैसे ही हैं, फॉरेन शिप की तरह ही हैं, सारी चीजें हैं. वो छोटे कैपेसिटी के जनरेटर होंगे, लेकिन तो जनरेटर हैं, मेन इंजन हैं, तो सब कुछ है. हमने यहाँ तक किया भाई, वी टुक दीज बॉयज हु केम टू अस विद प्रॉपर सीडीसी, और चाहे वो टीसी या डायरेक्ट एंट्री वाले जो सीडीसी वाले आया,
We persuaded them and said, तुम्हें नौकरी दे रहे हैं, जाओ इंग्लैंड वेसल पे काम करो, सी टाइम नहीं मिलेगा, वो सी टाइम नहीं वैलिड होता है, लेकिन जाओ काम करो, बजाय कि बाजार में टहल रहे हो हाथ में बोला लेके. और many of them, once they finished their 6 months, 9 months, depending, we took them on our vessel. Of course, not as a watch keeping rating, you cannot do that. लेकिन वो OS और जो वाइपर लेवल जिसको बोलते हैं ना, डेक रेटिंग, इंजन रेटिंग में कितनों को इजी हो गया था कि उनको एक बेसिक आइडिया हो गया था वहां पर, और जो है ये यहाँ पर दे कैन स्टार्ट एज OS और वाइपर या GS जो भी अवेलेबल था उस हिसाब से किया. व्हाट आई सजेस्ट इज दैट इसमें इंफॉर्मेशन लैक गैप है. देयर आर पीपल हु डू नॉट नो. वो एक दूसरे से जो पता लगता है वही हमारे पास अप्लाई करते हैं. Our membership list you have, we'll share with you, and those who are willing to make a small beginning, step by step growth in their career, they are welcome to apply and join. हमारा सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, जितने दिन काम करो ईमानदारी से, मेहनत से करो, उसके बाद में जब तुमको मिले अपॉर्चुनिटी और अच्छा लगे, go wherever you want to go. Obviously you have right to grow and earn more money. So we will share, you have it already, we'll share and encourage all those who are faced with this kind of problem where agents are demanding huge money. They're willing, they can start and make beginning with us. We have not only, we have more ships, well, 1,000 ships, but you know, more than EXIM vessels. हमारे शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से टर्नओवर बहुत ज्यादा रहता है. कोई भी एक आदमी जाके 9-10 महीने की नौकरी नहीं करता तो सीट ब्लॉक हो जाती है. हम लोग 4-5-6 महीना करते हैं तो उससे थोड़ा टर्नओवर रहता है. सो दे आर वेलकम टू जॉइन अस. हैप्पी टू accommodate. Thank you, Captain Rakesh Singh sir. Can I mean there were a few questions, but they were not relevant to the topic of our today. वो काफी क्वेश्चन आए कि मेरा 3 लाख दे दिया, 4 लाख, they were not relevant agent because वो individual, we don't want to go on individual issues. Yes, we are a general awareness create कर रहे. If there are others, those who are on the Zoom with us now on the panel today, other than the panelists, if they would want to share some thoughts, they are more than welcome. If there are because this is the मौका, ये जो अभी Facebook में कई सौ लोग देख रहे हैं Facebook पे भी, and ये वीडियो जब भी जाएगा अपलोड होगा तो definitely if there are any colleagues out here on this particular platform who would want to say something, they are welcome. Mr. Amar Singh Thakur साहब, General Secretary Maritime Union of India. हाँ जी सर. हाँ बोलिए. बहुत अच्छा लगा वेबिनार, बहुत बढ़िया है. तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, सीफेयर हु इज कॉम्पिटेंट उसको तो नौकरी मिल जाती है, बड़ा बड़ा कंपनी भी ले लेता है, और जो कॉम्पिटेंट नहीं है उसको एजेंट पकड़ लेता है कि मैं नौकरी दे दूंगा. सो देयर आर लॉट ऑफ एजेंट्स, लॉट ऑफ टॉट्स इन न्यू बॉम्बे साइड विच आई नो. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जय कुमार साहब को कि एक RPSL होल्डर उनका स्क्रूटनी करना चाहिए. These people are having RPSL, but वो कोई कैप्टन का नाम दे देते हैं, कोई चीफ का नाम देते हैं टू टेक ए लाइसेंस, बट उधर ना कोई कैप्टन रहता है ना कोई चीफ रहता है. They are some outsider, not qualified, not a seafarer also, but they give the name of this thing chief and captain and they take the license. उससे क्या करते हैं, शिप ऑन के साथ मिलके शिप ऑन को बोलते हैं कि बजट देते हैं, लो बजट. शिप ऑन को बोलता है मैं पैसा नहीं दे सकते, आप कैंडिडेट से पैसा लो. पैसा कौन देता है? सीओ पनामा सीओसी होल्डर, होंडुरास, दुबई, सिंगापुर सीओसी, डिपेंडेंट टाइप सीओसी, और वहां पे टॉप 4 भी पैसा देके जाते हैं. एंड दीज पीपल दे फिक्स द रेट 2.5 लाख 3 लाख सब. सो आई रिक्वेस्ट यू, जरा एक मतलब स्क्रूटनी करनी चाहिए एक चुपके से, मतलब एक CID की तरह. कहाँ RPSL कंपनी में कौन बंदा है उनको पूछिए आपका कैप्टन किधर है. ये तो जब ऑडिट होता है तो उस टाइम पे उनको बुला लेते हैं, कुर्सियां लगा देते हैं 4-4 5-5 6. ये चीफियर बैठ गया, इधर कैप्टन बैठ गया, सबका लैपटॉप रख देंगे लाइक एकदम. I have seen so many cases. There was one case in I will tell you some Lily में था इधर अपना साइड में साउथ में एक लेडी थी. She had opened the office, 4 chairs only,
and she was cheating करके ऑफिस बंद करके चली जाती थी. So there are lot of people. Even I tell you, agreement होता है, सीफेयर को पता है. MSc 2006 में MSc 2006 में लिखा भी गया है कि एग्रीमेंट जो है हर सीफेयर को पढ़ के जाना चाहिए. एजेंट क्या करते हैं, एग्रीमेंट उनको एयरपोर्ट पे जाके देते हैं. एग्रीमेंट वो पढ़ते नहीं है, उनका हैंड में देंगे आगे चले गए, दूसरा एग्रीमेंट वहां चेंज करते हैं. स्पेशल ईरान इसलिए हमने 2 आदमी लाए हैं. उनको एजेंट ने भेजा, 2 साल वहां रहे. एजेंट ने पासपोर्ट फाड़ के फेंक दिया था उनका. सर आपकी वाइफ का फोन आ रहा है. तो नहीं वाइफ का नहीं है. नहीं, आई एम हाइलाइटिंग द थिंग, इट्स अ फैक्ट. अच्छा, रिंगटोन अलग है वाइफ का. ठीक है. सो सर उन्होंने पासपोर्ट ही फेंक दिया. एजेंट लोग ने उनका पैसा भी नहीं दिया. 2 साल का उनको लाए विदाउट मनी. उनका किराया भी हमने दिया, एयरपोर्ट मतलब एयर का खर्चा भी हमने दिया. सेकंड थिंग, टंडन साहब को मालूम है, एक तो टंडन साहब मेरे ऑफिस में बैठे थे. देयर आर सम एजेंट्स, वो कंपनी का नाम लेके बिजनेस करते हैं. मैं तुमको वी शिप में डाल दूंगा. और बंदा कंप्लेन लेके मेरे पास आया, मेरा साहब 2.5 लाख रुपया खाया है. कहा भाई? बोला वी शिप में. साहब टंडन साहब इधर बैठे थे, मेरे को बोला यार वी शिप वाले इधर ही बैठे हैं. वो एजेंट जैसे बताते हैं कि भाई उनके बहुत पहुंच है. नहीं, नॉट लाइक दैट. they ask that तो इंटरव्यू विल बी डन. इंटरव्यू कहाँ है? दिल्ली में. भाई दिल्ली में क्यों? ऑफिस तो बॉम्बे में है. दिल्ली में जाके एक मॉल में ले गया, अंडरग्राउंड नीचे जाके उसका इंटरव्यू ले रहे हैं. वो एजेंट वो तो अच्छा था, उसके माँ साथ में वीडियो बना दिया उसका. तो देयर लॉट ऑफ दिस थिंग. थॉट्स का तो मतलब रोक तो नहीं सकते. अभी आप बोलते हैं एफआईआर करो. एफआईआर क्यों करेंगे? वो पुलिस वाला खुद ही बोलता है. अरे साहब हमको बताओ. ऐसा अमर सिंह साहब, एफआईआर करके कुछ तो आगे बढ़ना है. एज अ ऑर्गेनाइजेशन वी हैव टू डू दैट. नहीं, वी आर डूइंग कंक्लूजन. सपोर्ट सिस्टम हम लोग सोल्व करते हैं. हमने किया, पुलिस वालों से साथ बैठ के किया है, सोल्व किया बड़ा प्रॉब्लम. बट क्या होता है, कभी कभी पुलिस से भी जाते हैं ना, पीछे जा होता रहता है. सब कैसा करते हैं, बंदे कैसे बेचते हैं लोग, हमको ही पता हो रास्ता. तो पुलिस वाला भी जेट बन जाता है. अब किस को रोकेंगे आप? Okay, let's not go into that. We are not in an ideal world. I think Captain Rajesh Tandon has his hand up. Yes, please, sir. Captain Rajesh Tandon, sir. Yeah, good evening, everybody. नमस्कार सब लोगों को. बहुत अच्छा आपने ऑर्गेनाइज कराया अब्दुल गनी जी ये सेमिनार. मैं इसी पॉइंट पे जो अमर सिंह ने जी उठाया, दैट स्पेसिफिक केस, मुझे तो पता भी नहीं चलता कि ये केस हुआ है मेरी कंपनी में. जब मुझे ये पता लगा तो मैंने जाके पता किया, इसको थोड़ा ट्रैक डाउन किया, ट्रेस डाउन किया, तो पता लगा कि ये एजेंट ने उन लड़कों को जिस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस था उसी की लॉबी में बैठा के इंटरव्यू करने की कोशिश की थी और पैसे लिए थे. तो हम लोगों ने बिल्डिंग की सोसाइटी से वो उसका वहां का सीसीटीवी का फुटेज निकल के जब चेक किया तो देयर वाज नोबडी फ्रॉम वी शिप्स ऑफिस. पर क्योंकि इन लोगों ने क्या करते थे, इन्होंने वहां बुला के बैठ जाते थे और कोई टाई वाई पहन के आया, घबराया हुआ सा बच्चा आया, यू कम फॉर वी शिप्स? हाँ, आई एम सो एंड सो फ्रॉम वी शिप्स. अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया. दैट होल प्रोसेस happened in the eyes of the CCTV camera. You know, we actually went along with that boy to lodge up FIR in the police station because that was a specific, mal action against my company. The cops over there turned around and said, "ये Bombay की story, आप Bombay में जाके FIR lodge कीजिए." So, you know, as a company also we were made to run around. The point I'm trying to make over here by bringing this subject out is that there is a very high level of duty of care that the individual seafarers have to exercise for themselves. इतना नौकरी मिलना इस इंडस्ट्री में आसान नहीं है आज के दिन, particularly in the rating category, क्योंकि मार्केट में सरप्लस है. ये चीज हमको सबको मालूम है. तो इससे 2 नसीहत निकलती हैं. क्योंकि सरप्लस है, सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट होएगा. तो जो बेस्ट कॉम्पिटेंट होगा, आई थिंक somebody mentioned the competent persons will be getting the job priority. तो उनको नौकरी पहले मिलेगी. दूसरी चीज, अगर आप पूरा सब कुछ पता करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा. शुरू में कैप्टन जय कुमार ने बोला था कि देयर इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डीलिंग विद करप्शन और alleged corruption within each organization. Sir, it is with all due respect, it is not only in the government mechanism, even in the private sector, all companies of repute have a whistleblowing mechanism, have a reporting mechanism for any kind of alleged
corrupt practices, and it is kept anonymous also so that the inquiries can be taken out. The example that Prasad, my friend Prasad Hariharan said, उन्होंने तो देख लिया वहां हो रहा है कुछ, लेकिन अगर उन्होंने नहीं भी देखा होता, वो बच्चे बाद में आके कंप्लेन करते कि आपके ऐसा हो रहा है, Prasad Hariharan would have done exactly the same thing to inquire into the whole process. So we do have the processes, but unfortunately, we are also handicapped that we can't go to the police for a possible alleged crime that can take place. The police will only act when an actual criminal act takes place. That is, if somebody on a possibility or trying to cheat somebody is not a crime as far as I can understand the Indian IPC code. So, the only person who can take care of themselves, fortunately, unfortunately, is the seafarer himself. And I'm not trying to shy away from that responsibility as a potential employer. I want to work with our union colleagues to make a mechanism whereby we should assist our seafarers and prevent them from being cheated by such elements. I would like to compliment Mr. Sandesh, the way he said how he dealt with his frustrations of not getting a job for 2 years. He should be an example for all the other potential people who are here. And I've been watching the Facebook chat, Abdul Ghani ji, a lot of people are still quite cynical कि कुछ नहीं होता है, सब मिले हुए हैं. ऐसा फीलिंग जरूर आएगा जब आपको नौकरी नहीं मिलेगी. लेकिन मैं यहाँ बोल सकता हूँ, जितने चेहरे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, इस कंपनी में अगर इस लेवल पे अगर आपने जाके शिकायत करी तो वो चीज जरूर देखी जाएगी, उसको एग्जामिन किया जाएगा, और अगर कुछ उसमें से निकलता है तो उसको डील किया जाएगा. हम लोग पैसा लेके नौकरी नहीं देते हैं, हम लोग सिर्फ कॉम्पिटेंस पे नौकरी देते हैं. और अगर हमारे नाम से आपसे कोई ये कह रहा है तो वो झूठ कह रहा है. उस चीज को आप समझना चाहें समझिए, बाकी आपके ऊपर है अपनी सेफगार्ड करने के लिए. Thank you, Abdul Ghani ji. Sorry, it was a long discourse, but I think it was important. I think it was a very positive note. जैसा आपने एक जो बात, the theme of a seminar ही खुद ये है, the choice is yours. आपको पैसा देके एक नौकरी मांगती है कि आपके competence पे करनी है, वो आप देखिए. तो seafarers also have to take their duty of care first, क्योंकि we are not in an ideal world, मगर उनके ऊपर बराबर पहला ये है कि भाई they can increase their, उनका सक्षम कर सकते हैं, they can enhance their skills and definitely. So I think before we have coming close to our program. Just because on this, those who have registered with us, we are giving them 20 lucky winners. We are giving them an opportunity to do the NUSI skill course. जो skill course NUSI के तरह से हम कर रहे हैं, we are giving them an opportunity to do it free of charge. तो मैं जरा निकाल के भी, but it will take time, but मैं सोच रहा हूँ कि I will announce it later. मैं 20 निकाल के रखता हूँ. I will, we have to do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, or 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ये 20 मैंने निकाल के रखे. and I will read out some of the names. Remaining उनको हम कांटेक्ट कर देंगे. One is Ratish Kumar from Kanangan, Kerala. Richomi Munao from Manipur. I'll just read out 5 names. Amit Singh from Rajasthan. Kamal Nayan from Bihar. Manoji Adak from Andaman, and Satya Prakash from Haryana, and Laik Ahmad, Allahabad, UP. There are remaining ये जो बाकी बच गए, I am not reading out the names. मैंने थोड़े नाम read किए because we need to wrap up the session also. और टंडन साहब का हाथ उठा है. Yes, टंडन साहब. अब्दुल गनी जी, मैं अभी संकल्प हमारे चेयरमैन फॉस्मा के वो मीटिंग्स चले गए, उनको दूसरी मीटिंग में जाना था, मुझे भी जाना है, लेकिन उन्होंने जाने से पहले कहा है जो आपने किया है 20 लकी ड्रॉ, इफ यू स्टिल हैव एनी मोर potential candidates on behalf of FOSMA, we would like to sponsor 20 such candidates for the skill enhancement. You may please take the lucky draw out and tell us about it. और 20 नाम निकाल लेता हूँ. हाँ, निकाल लीजिए और बता दीजिएगा हमको उन लोगों को. We already have 20, मगर मैं निकाल के पहले बाहर निकाल लेता हूँ. 1 2 3 4
അഞ്ച് three chairs for four ആറ് now. ഏഴ് Three chairs ഏഴ് for four. ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, or and 10. I'm putting this back inside because this was more than 20. So I've got 20 more names. Thank you for that, and really appreciate all the panelists who have come, and particularly to Captain Jay Kumar Saab. Aapka trigger tha which made this platform possible, and under the aegis of the Azadi Ka Amrut Mahotsav, we are doing this, and we are very, very happy to all the participants. और जाने से पहले मैं ये कहूंगा कि सभी सीफेयर आपके मन में संशय होगा कि जैसा टंडन साहब ने बताया कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है. We are definitely doing it for the betterment of our seafarers, ताकि आप एजेंटगिरी के चक्कर से बाहर निकल जाओ. खुद 3-3 लाख रुपए एजेंट को देने के बजाय 50-60 हजार रुपए अपने ऊपर खर्चा करो, अपनी काबिलियत बढ़ाओ, इसमें ज्यादा फायदा हो. 3 लाख 4 लाख ये ले, 3 लाख 2 लाख 4 लाख दे रहे ले. ओपन सीडीसी वाले 5 लाख 5.5 लाख दे रहे. तुम्हारी लाइफ है. इफ यू वांट टू टेक आवर एडवाइस, टेक इट, अदरवाइज इट इज अप टू यू. उसके बजाय 1 लाख रुपया 50 हजार अपने ऊपर खर्चा करके अपने क्षमता बढ़ाओ. So I would like to end on this positive note, and I once again thank all the participants and also those who are watching us, even the on the Facebook, and it will go live very soon on the video. We'll upload it. Thank you so much. Thank you, sir.